Good morning, students. Now is the same chapter as 3D, that is a three-dimensional geometry. Now is the equation of a line. Then exercise 11.2, but today is only basic equation of line. Student, is a line. We have a study equation of line in two-dimensional geometry in 11th class, and today now is a topic equation of line in 3D. थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री. इसमें थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में लाइन का इक्वेशन क्या होता है हमको ये मालूम है. व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन इन 2D? दैट इज y minus y1 equals to mx minus x1, right? But today now is the discussion equation of line in 3D, three dimensional geometry में, that is the equation of line. First thing is the standard form equation of the line in standard form, x minus x1 upon a equals to y minus y1 upon b equals to z minus z1 upon c. This is the equation of line in standard form. When x1, y1, z1 is the given point, passing through point x1, y1, z1 is point, जिस point से line pass हो रही है. But what are the ABC? Then ABC is direction ratio, dr direction ratio of the line. डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन इज ABC. मतलब एक लाइन का स्टैंडर्ड फॉर्म इन 3D में, लाइन का स्टैंडर्ड फॉर्म x माइनस x1 अपॉन a इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन b इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन c, राइट? दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लाइन. एंड नाउ द वेक्टर फॉर्म, वेक्टर r इक्वल्स टू वेक्टर a प्लस लैम्डा वेक्टर b. दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म. स्टूडेंट, आपको हर फॉर्मूले दो फॉर्म में पढ़ने होंगे, लेकिन मैं आपको सबसे पहला फॉर्मूला कि एक लाइन का स्टैंडर्ड फॉर्म को क्लियर कर रहा हूं, राइट? फॉर एग्जांपल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट. फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन passes through the point, and now point is given 5 minus 2 4. Now point is given 5 2 minus 4, right? And ABC are direction ratio, and which is parallel to, which is parallel to, now parallel to 3 2 minus 8, 3 comma 2 comma minus 8. अब स्टूडेंट आपके सामने व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन, वन पॉइंट फार्मूला, राइट? एक पॉइंट गिवन है और डायरेक्शन रेशियो पैरेलल टू 3. आपने देखा इसके आगे कहीं भी ब्रैकेट नहीं लिखा हुआ, दिस मीन्स डायरेक्शन रेशियो. कभी भी ये नहीं लिखा हुआ आएगा कि दिस इज द डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन, लिखा हुआ आएगा पैरेलल टू दिस 3 2 minus 4. दैट मीन्स दिस इज ABC, right? Student, first thing, now write the formula equation of the line, right? Equation of the line in standard form, right? So then equation of the line is x minus x1 upon a equals to y minus y1 upon b equals to z minus z1 upon c. Now substitute the point. This is x1 y1 z1, जिस पॉइंट से लाइन पास हो रही है. x minus x1, x1 is 5, y minus y1, y1 is 2, and z minus z1, z1 is a minus 4, so minus minus plus 4. Upon ABC, ABC our direction ratio, A is a 3, B is 2, and C is minus 8. Then this is answer, equation of line passing through one point. But same question, suppose find the equation of line in vector form. Student, vector form में what are the vector A and what are the vector B? Vector A is a passing through point. This is the notation of passing through point, and vector B are direction ratio, right? So suppose अगर vector form मांगता है तो now vector R. Now write the formula, vector R equals to vector A plus lambda vector B.
Now vector A is a passing through point 5, 2, minus 4. Now write in vector form that what are the vector A, that is a 5 I cap plus 2 j cap minus 4 k cap, this is vector A, plus lambda, what are the vector B is the direction ratio, then 3, 2, minus 8, that is a 3 I cap plus 2 j cap and minus 8 k cap. This is equation of line, vector R as it is. वेक्टर आर एज इट इज रहेगा, वेक्टर आर की वैल्यू आपको एक ही कंडीशन में रखनी है जब आपको वेक्टर टू कार्टेशियन या कार्टेशियन टू वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना. सेम फॉर्मूला इक्वेशन ऑफ लाइन इन 2 पॉइंट. You know student, equation of line in 2 point form, this is the second formula. Now equation of the line in 2 point form, 2 point are given, मतलब एक लाइन 2 पॉइंट से पास हो रही हो तो फॉर्मूला x माइनस x1 अपॉन x2 minus x1, y minus y1 upon y2 minus y1, and z minus z1 upon z2 minus z1. This is Cartesian form. Then x1, y1, z1 is a point for coordinate of first point, and x2, y2, z2, that is the coordinate of second point. But now the vector form. What are the vector form? Vector r equals to vector a plus lambda, vector b minus vector a. That means स्टूडेंट यहाँ पर ए और बी बोथ आर पासिंग थ्रू पॉइंट. फॉर एग्जाम्पल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन. फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन नाउ passing through the points. Find the equation of the line passes through the point. There are 2 points are given. One point is minus 1, 0, 2. Coordinate of first point minus 1, 0 and 2. And now the another point that is 3, 4, 6. आपके एक्सरसाइज 11.2 में दो क्वेश्चन इज डिपेंड ऑन 2 पॉइंट फॉर्मूला. 1 पॉइंट पे डिपेंड इज 3 क्वेश्चंस, बट 2 पॉइंट पे डिपेंड 3 क्वेश्चन, 3, 4, 6. नाउ गिवन 2 पॉइंट. या लुक हियर. फर्स्ट थिंग, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स. यू नो स्टूडेंट, व्हाट आर द इक्वेशन ऑफ लाइन in 2 point form? 1 point form, that is x minus x1 upon e equals to y minus y1 upon b equals to z minus z1 upon c. But now the 2 point formula, x minus x1 upon x2 minus x1, y minus y1 upon y2 minus y1, and z minus z1 upon z2 minus z1. Now the first point x1 y1 z1, second point x2 y2 z2. Now substitute x minus x1, x1 is minus 1, so minus minus plus 1. Y minus y1, y1 is 0. Z minus z1, z1 is 2. Right? Now x2 minus x1, that is a 3 minus 1, that is a 3 plus 1. 4 minus 0 and 6 minus 2. So now the equation of line in standard form 3 plus 1, 4, y upon 4 and z minus 2 upon 6 minus 2 is 4. This is the equation of line in standard form. So 2 पॉइंट दे रखे हो तो अभी हम लाइन का इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं, और 1 पॉइंट हो तो अभी लाइन का इक्वेशन. नाउ लुक हियर, दिस इज द फर्स्ट 2 फॉर्म्स की इक्वेशन ऑफ लाइन इन 1 पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म. नाउ लुक हियर, सपोज फाइंड द एंगल बिटवीन 2 लाइन्स. You know student, angle between 2 line, yeah, angle between 2 plane, yeah, angle between line and plane, right? This is very very easy कि 2 लाइन के बीच में अगर सपोज एंगल फाइंड करना हो. देयर आर 2 क्वेश्चन नंबर 10 एंड क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13 आर टोटली डिपेंड ऑन दिस कंडीशन. सबसे पहले फाइंड द एंगल बिटवीन 2 लाइन. Now look here student, this is the third formula, angle between 2 line. Now look here, angle between 2 lines, then formula is cos theta equals to, student आपको याद होगा, what are the angle between 2 vectors, that is a cos theta equals to vector A dot vector B upon magnitude of A into magnitude of B. Right? Same angle between 2 line का formula cos theta equals to a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 upon under root a1 square plus b1 square plus c1 square under root
A2 square plus B2 square plus C2 square. This is the angle between two lines. Question number 10, 11, 12, 13, last four questions are depend on this formula, angle between two lines and whole mod, right? That means it is always positive. So, this is whole mod. Same this formula in Cartesian form. But what are the vector form? Cos theta equals to vector A dot vector B, right, upon magnitude of A into magnitude of B. This is the equation angle between two vector, but now angle between two line in vector form, that is a vector B1 dot vector B2 upon magnitude of B1 into magnitude of B2. You know, student, magnitude B1, B2, where B1 is a direction ratio of line. So, B1 is the direction ratio of first line and B2 is the direction ratio of second line. So, this is the formula in vector form. Now, what are the condition of two line are perpendicular? You know, student, two line are perpendicular. That means theta is 90. Or theta is 90 and cos 90 is 0. This is the cos multiplied. So, what are the condition of two line are perpendicular? A1, A2 plus B1, B2 plus C1, C2 equals to 0. This is the condition two line are perpendicular. आपको याद होगा आपने एक condition पढ़ी थी, two line are parallel, 3 points are collinear या two line are parallel. Just next last class में हमने discuss किया था what are the condition of 3 points are collinear, A1 upon A2 equals to B1 upon B2 equals to same condition two line are parallel, then condition A1 upon A2 equals to B1 upon B2 equals to C1 upon C2. This is the condition two line are parallel. But these are condition in Cartesian form. This is Cartesian form. But what are the vector form of two line are perpendicular? Vector में अपने condition पढ़ी है कि two vector are perpendicular, that is dot product is 0. A dot B equals to 0. यहाँ B1 dot B2 equals to 0. This is the condition of two line are perpendicular, but now in vector form. Same कोलिनियर की कंडीशन टू लाइन आर पैरेलल इक्वल्स टू लैम्डा बी, ये कंडीशन होती थी. यहाँ वेक्टर B1 इक्वल्स टू लैम्डा वेक्टर B2. दिस इज द वेक्टर फॉर्म. सो स्टूडेंट, एंगल बिटवीन टू लाइन आर परपेंडिकुलर, टू लाइन आर पैरेलल, दीज आर कंडीशन. नाउ लुक हियर, डिपेंड ऑन क्वेश्चन. सपोज एंगल फाइंड करना है, एंगल बिटवीन टू लाइन, एन इक्वेशन ऑफ टू लाइन आर गिवन. Right? Look here. Equation of two line are given. Then equation of first line. Then equation of first line is question number 10. Equation of the lines are, two line are given. One is the vector r equals to 2i cap minus 5j cap plus k cap plus lambda 3i cap plus 2j cap plus 6k cap. Is another line, equation of second line, 7i cap minus 6k cap plus new I cap plus 2j cap plus 2k cap. These are two lines, right? Student, first thing, एक लाइन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वेक्टर फॉर्म में. वेक्टर r इक्वल्स टू वेक्टर a प्लस लैम्डा वेक्टर b. तो सबसे पहले आपको दोनों लाइन से, दिस इज द फर्स्ट वेक्टर a, दिस इज वेक्टर b, बट देयर आर टू लाइन. नाउ वेक्टर a इज 2i cap minus 5j cap plus k cap from first line, and vector b is 3i cap plus 2j cap plus 6k cap. This is vector A and vector B. Now, this is another line. Vector A is a 7i cap plus 0j cap, 0j is not given, and minus 6k cap. And vector B is I cap plus 2j cap plus 2k cap. Right? But there are two lines. The first line is vector A and vector B, now denoted by vector A1, vector B1. Second line say from vector A2 and vector B2. And now find the angle between two vector, then formula in
this formula. Now find vector b1 dot b2. वेक्टर b1 डॉट वेक्टर, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कैसे फाइंड करते हैं? नाउ i डॉट i, j डॉट j एंड k डॉट k is 1. So now 3 1s are 3 plus 2 2s are 4, right, plus 6 2s are 12. That means 12 plus 4 16, 16 plus 3 19. This is the vector b1 dot b2. And now find the magnitude of b1. You know student, magnitude of b, this is b1. Now find magnitude. Then under root square of the coefficient of I cap, square of the coefficient of j cap, and square of the coefficient of k cap. Then 36 plus 4 40, 49, and is the square root of 49 is 7. Now find the magnitude of b2. b2, that is magnitude of b2 is just under root 1 plus 4 plus 4, that is a 9, and the square root of 9 is 3. Now find the angle between two lines. Angle between two lines. So what are the formula of angle between two lines? Then cos theta equals to vector b1 dot vector b2 upon magnitude of b1 into magnitude of b2. Then b1 dot b2 is 19 and magnitude of b1 is 7 and this is 3. Then cos theta equals to 19 upon 21. Then theta equals to cos inverse 19 upon 21. This is angle between two vectors. But now this is vector form. Then Cartesian form in question number 11. Right? So student, same. Supposedly हमको question number 12 दे रखा है. Then two equation of two line are given and find the value of constant. Right? Find the value of lambda. तो सर उसमें भी अपन को अप्लाई करना होगा कि व्हाट आर द कंडीशन ऑफ टू लाइन आप परपेंडिकुलर a1 अपॉन a2 a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल्स टू 0. सो स्टूडेंट प्लीज सॉल्व एक्सरसाइज 11.2. ओनली लाइन के 3 फार्मूले डिस्कस किए. वन इज द इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्टैंडर्ड फॉर्म, सेकेंड इज द इक्वेशन ऑफ लाइन इन 2 point फॉर्म, थर्ड इज द एंगल बिटवीन टू लाइन, एंड फोर्थ इज द टू कंडीशन टू लाइन आर परपेंडिकुलर एंड टू लाइन आर पैरेलल. थैंक यू.